Hello students, in the last class we talk about the functional depending upon n functions and their first order derivatives, and the another article we talk about functional depending upon higher order derivatives. Okay, so there only one independent variable was there. So today we will talk about the first article is functional depending upon two independent variable and one dependent variable. Okay, so here we are talking two independent variables. So we consider the functional I of u, where u is the dependent variable which is dependent upon two independent variable, और दो independent variable मान लेते हैं हम x and y. So we say that will be double integral over the region R, because there are the two independent variable. So we will take double integral over the region R f of x y u of x y ux comma uy. Okay, these are the partial derivative with respect to x and y. Okay, so we have to find out the extremal value for that functional. So in the third lecture we talk about the extremal value of the I will be obtained if and only if उसके लिए हमारी necessary condition क्या थी, if the variation of the functional is 0 then you will get the functional will be the extremal. Okay, so here also we will use that theorem. So that means we will use the necessary condition. So you can see in the about the integral they are talking about here f. What is f here? F is the function with continuous derivative with all of its arguments. Okay, means सभी arguments के respect में हम derivative find out करेंगे in the region R. We talk about x and y are the independent and u is the dependent variable which depends upon x and y. Okay, so you have to find out the unknown function. What is the unknown function here? U. U is to be determined such that it takes the first and the second derivatives in the region R, and u takes the given value on the boundary of R. That means some value is given on the boundary of R, and you have to find functional has an extremal of the stationary value for u is equal to uxy. Okay, so that means our main target, you have to find out the extremal of the stationary value of the functional. Okay, for the function u. Now we use the theorem as we discussed in the lecture 3. If u is the extremal of the function I, so what will be the necessary condition? Then delta of I will be equal to 0. Okay, so we use the same theorem. So I was given here. I was what? I of u is equal to double integral over the region R f of x y u ux uy. So similarly delta of I will be equal to delta of that integral. So you are taking delta of this integral. So what it will be? That will be double integral of, you just take the partial, I mean the derivatives with respect to chain rule, curl f by curl x into delta x plus curl f by curl y delta y plus curl f by curl u delta u plus curl f by curl ux into delta ux plus curl f by curl uy into delta uy. Okay, so there in the theorem which we discussed in the last lecture, I mean the lecture 3, what was there? You have to find out the extremal value for the function I. So the variation of the function I were talking about, so we were considering their independent variable as the fix. So here x and y are the independent variable, we keep it fixed. So when x and y are fixed, so you say that delta x and delta y that will be equal to 0. Okay, if delta x and delta y is equal to 0, so you will say that that part will be eliminated over here. Okay, so that means the integral, this integral becomes double integral over the region R, curl f by curl u delta u, curl f by curl ux delta ux, curl f by curl uy into delta uy dx dy is equal to 0. I call it 2. Now I assume here the variation delta u is to be continuously differentiable over R, and we say it vanishes at the boundary of R, because we are saying that u have some given value on the boundary of R. If you have some given value on the boundary of R, so you will say that delta of u that will be equal to 0 on the boundary. Okay, अगर u की कोई value given है तो that will be constant, so you will say that delta of u will be equal to 0. Okay, on the boundary. This gamma is known as actually the boundary of R. R का अगर कोई region है तो उसकी boundary को मैं gamma से call करूँगा इससे. Okay,
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एक्चुअली. सो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दिस वन एंड दिस वन. ये पहली वैल्यू निकालने के लिए आई यूज़ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कर्ल बाय कर्ल x of f of ux into delta ux. Okay, what you have to find here, you can see here you have to find curl f by curl ux into delta of ux. So what I take here, just I take partial derivative of f ux into delta u with respect to x. F ux means curl f by curl ux. So when I use this, so you will say curl by curl x of f ux into delta u. By the product you will find out first as it is second derivative plus second as it is first derivative, and okay, this is actually the operator you can use, delta into curl by curl x of u. Okay, this is commutative actually. So this thing we have used in the previous theorems. Okay, so that will be delta of curl by curl x of u, it will be delta of ux. Okay, and this is as it is delta of u into this one. So this thing we want, ये वैल्यू हमें चाहिए. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू कि वी वांट दिस वैल्यू, सो जस्ट ट्रांसफर दिस वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हेन यू ट्रांसफर दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट कि इसको हमने लिख दिया कर्ल बाय कर्ल यू एक्स इंटू डेल्टा यू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस. सो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ यू एक्स इंटू डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ यू एक्स. ओके, सो दैट मीन्स वी गॉट, ये हमें जो सेकंड पार्ट था इसकी वैल्यू हमें आ गई. वी फाइंड दिस वैल्यू एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ ऑफ यू वाई इंटू डेल्टा यू वी विल कंसीडर देयर. ओके, सो सिमिलरली इसको फाइंड आउट करने के लिए वी कंसीडर कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ ऑफ यू वाई इंटू डेल्टा यू. नाउ अगेन यू यूज दैट इज द फर्स्ट फंक्शन and this one is your second one. So you can say that by the product rule, first as it is second derivative plus second as it is first derivative, and this is operator is commutative actually. So you will take that, get delta into curl by curl y of u. Okay, so it will be this one. You have to find out this value. अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, so transfer this value to the left hand side. So you will get this कि f of u y, or you can say that curl f by curl of u y into delta u y will be equal to curl by curl y of f u y into delta u minus delta u into curl by curl y of f of u y. Okay, so that means we both the value I got. So इक्वेशन नंबर 4 and 5 से जो वैल्यू मेरी फाइंड आउट की है वो वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करनी है, जस्ट प्लेस इट देयर इन द इक्वेशन नंबर 2. जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 4 और 5 की वैल्यू. सो सिमिलरली यू कैन सी हियर that we are placing that value 4 and 5 in the equation number 2. Okay, so when you use in the equation number 2 you can see that curl f by curl u into delta u is as it is, and value of curl f by curl ux into delta ux की वैल्यू आपकी क्या आ गई, this one, and curl f by curl uy into delta uy की वैल्यू आपकी आ गई this one. Okay, so from here you can see this term, and because with this term delta u is present here, and with this term is also delta u is present here. Okay, and I can take that value, and we can say that, sorry, okay, all the things I have to consider. You can say when I consider all the things, so you can say curl f by curl u minus हमने जो वैल्यू लेनी थी डेल्टा यू एक इस टर्म के साथ हो जाएगा, एक इस टर्म के साथ और एक इस टर्म के साथ. तो जो डेल्टा यू वाली टर्म्स है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो कर्ल एफ बाय कर्ल यू इंटू माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इंटू डेल्टा, और सॉरी एफ ऑफ यू एक्स माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई ऑफ एफ ऑफ यू वाई. ओके, एंड डेल्टा यू इज कॉमन, सो इट विल डेल्टा यू इंटू दिस वन. एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर, एक ये टर्म बच गई आपके पास, एक ये टर्म बच गई. ओके, so I writing the remaining term as double integral over the region R. You can see here this value is there actually. Okay, so I take the individual integral over this one and over this one, that will be equal to 0. Now we use the Green theorem. By the Green theorem we know that if P and Q are the differentiable functions, then double integral over the region R कर्ल q by कर्ल x minus कर्ल p by कर्ल y dx dy is equal to what,
इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ओके, सो ग्रीन थ्योरम की हमारी क्या करती है, जो हमारा मतलब सरफेस इंटीग्रल को हमारा कर्व इंटीग्रल पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ओवर द रीजन वी वर टॉकिंग अबाउट, तो हमने जो इंटीग्रल ओवर द रीजन था उसे हमने इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री पे कन्वर्ट कर दिया है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, इट विल बी इन दिस फॉर्म, कर्ल क्यू बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाई कर्ल वाई, देन इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर, दैट विल बी, जिसका पी का रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में था तो पी ऑफ डी एक्स, पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो प्लस क्यू इंटू डी वाई वी विल टेक। ओके, एंड सिमिलरली दिस थिंग आई हैव टू यूज ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर इस टर्म को हम कॉल कर सकते हैं इन दिस वे, यू कैन से इट विल बी, सो वी कैन यूज दिस एज ग्रीन थ्योरम हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ आई सपोज दिस इज क्यू, I suppose this is P. Okay, so minus sign should be there. So I consider it there is minus and a minus of this. So minus एक यहाँ पे consider कर लीजिए. So it will be minus of f u y into delta u, that will be as a P, and f of u x into delta u, that will be as Q. Okay, so जब इसको हम ग्रीन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, so you say that जो हमारा डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आ रहा है, that will be converted to the integral over the boundary, that will be minus of f u y into delta u dx plus f of u x into delta u y or delta of u into dy. Okay, that thing. So that thing we will use in this way. You can check that double integral of this one, इसको हमने रीराइट करके माइनस एंड माइनस वी विल टेक दैट, इट विल बी, ये p हो गया आपका, दिस टर्म इज p, सो p इंटू डी एक्स प्लस दिस टर्म इज योर q, q इंटू डी वाई. Okay, so sorry, it's not my, that was a mistake. So you say that okay, that will be equal to this thing. Now we will use this value over there. अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं यूज करता हूँ, so from here I can use कि this value, sorry, this one and plus integral over the boundary I will use here by using the green theorem. So we will get this thing. So it will be equal to this one, sorry, and जब यहाँ पर हमने ये वैल्यू यूज किया जो हमारे पास सेकंड टर्म है इक्वेशन नंबर 6 में, सो व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पर हमने जो इंटीग्रल ओवर द रीजन आर था उस इंटीग्रल ओवर द रीजन बाउंड्री हमने यूज किया, बट हमारा जो डेल्टा ऑफ यू है, डेल्टा ऑफ यू एज्यूम दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर यू हैव सम गिवन वैल्यू ऑन द बाउंड्री देन डेल्टा ऑफ यू विल बी इक्वल टू 0 ऑन द बाउंड्री. So if delta of u is equal to 0 on the boundary, so you will say that that part will be equal to 0. So if delta of, I mean that part is equal to 0, so that means from the equation number 6 you can say that, from the equation number 6 you can say this part will be equal to 0. Okay, if this part is equal to 0, we are left with only this part. So same thing we are using here. We have double integral over the region R, curl by curl u minus curl f by curl x of f of u x minus curl by curl y of f of u y delta u dx dy, but delta u is arbitrary. If this is arbitrary in R, so we say that that part will be equal to 0. Okay, so I can say f of curl f by curl u minus curl by curl x of f u x minus curl by curl y of f of u y is equal to 0. This I call this equation is 9. So this equation is actually known as Euler-Ostrog-Radesky equation. Okay, corresponding to the functional having the two independent variable and one dependent variable. So that means अगर एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब आपको ये आइलर इक्वेशन यूज करनी है जिसे हम Euler-Ostrog-Radesky इक्वेशन कहते हैं. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट आर्टिकल यू हैव फंक्शनल डिपेंडिंग अपॉन टू independent variable and two dependent variable. Okay, so I consider that the function is in the form of I of u y is equal to double integral of the region R, because two independent variable is there. So f of x y and u of x y, v of x y, that means दो फंक्शन है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहे हैं x और y पर. ओके, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव of v विद रिस्पेक्ट टू x,
and u with respect to y and v with respect to y. Okay, so this is your functional where the x and y are independent variable. This is written over there. Okay, and u and v are the continuously differentiable function of x and y which you have to determine. Okay, and R is the region actually. Okay, now again we use the same theorem. If you have to find out the extremal value of the functional I, that will give the extremal value if delta of I is equal to 0. Okay, so we use the necessary condition that 1 will be the extremal if delta of I is equal to 0. So delta of I is equal to 0, so I take delta of I is the double integral, so delta of that double integral will be equal to 0. So again we take the delta inside, we apply the chain rule over there. So similarly when you apply that chain rule, so you will get this form. Okay, curl f by पहले f का with respect to f with respect to x into delta x plus f with respect to y into delta y, f with respect to u into delta u, f with respect to v into delta v, f with respect to ux into delta ux, f with respect to vx into delta vx, f with respect to uy delta uy plus f with respect to vy into delta vy, dx dy is equal to 0. But since when you are taking the variation of the I, so there we consider the independent variable as fixed. So here there are the two independent variable x and y, so we keep them fixed. If these are fixed, so we say that delta of x and delta of y, that will be equal to 0. If this is equal to 0, so we say that that part will be eliminated actually. Okay, if this part is eliminated, so आपका double integral क्या बचेगा, that will be the remaining part. Okay, so remaining part will be this integral is equal to this one. Okay, now जो u के terms है that I collect different and in the different integral, and the terms with respect to y v I consider it the different integral. Okay, so I take curl f by curl u into delta u, curl f by curl ux into delta ux and curl f by curl uy into delta uy. इन तीनों टर्म्स को एक साथ अलग इंटेग्रल में कन्वर्ट इकट्ठा कर देते हैं. सो दैट विल बी दिस वन, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर दिस वन, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है this one and this one I consider in the different integral, that is integral over the region R will be this one, dx dy is equal to 0. Okay, so when this you are getting this one, I call this integral is actually a, I call this is as a and this is as b. Okay, अब a आपके पास आ गया दिस टर्म, लेकिन अभी हमने पिछले आर्टिकल में किया है कि a आपका क्या आ गया, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर कर्ल एफ बाय कर्ल यू एक्स इंटू डेल्टा यू प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल यू एक्स इंटू डेल्टा यू एक्स प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल यू वाई इंटू डेल्टा ऑफ यू वाई. लेकिन जो अभी हमने ऊपर की तरफ इंटीग्रल सोल्व किया, आई मीन पिछला आर्टिकल सोल्व किया, उसे सोल्व करने के बाद हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी थी. जब इन दोनों की वैल्यू निकाल दी थी तो हमारे पास क्या बचा था, कर्ल एफ बाय कर्ल यू माइनस व्हाट वाज दैट, that was minus curl by curl x of f of ux minus curl f by minus curl by curl y of f of uy. ओके, सो इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू हमने पिछले आर्टिकल का यूज करते हुए वी राइट इट दिस वन, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर कर्ल बाय कर्ल यू माइनस ऑफ दिस. ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए. तो ए की वैल्यू इस फॉर्म में आ गया हमारे पास. सिमिलरली इसे हम बी कॉल कर रहे हैं. अगर इसमें बी कॉल कर रहे हो, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जस्ट u की जगह पर हमारा v है. सो सिमिलरली वी अप्लाई द सेम रिजल्ट ऑन द b. सो b पर भी अगर मैं सेम रिजल्ट अप्लाई करता हूँ, सो यू विल गेट दिस थिंग. पिछले आर्टिकल का यूज करते हुए जो ये इंटीग्रल था आपका, दैट इंटीग्रल विल बी डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर कर्ल एफ बाय कर्ल वी माइनस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एफ वी एक्स माइनस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ ऑफ वी वाई डेल्टा वी डी एक्स डी वाई. ओके, नाउ बोथ द वैल्यू 4 and 5 वी विल यूज इन द above equation, that is equation number 2. okay, तो ये दोनों इक्वेशन की हम यहाँ पर वैल्यू यूज कर देते हैं, that will be this one here. So when you use this value over there, so you will get that will be this plus this will be equal to 0. okay, but these two u and v are the I mean both are the dependent, but they are not dependent to each other. okay, so you say that if this plus this part is equal to 0, so they are not dependent to each other, so that means individually this integral plus this integral will be equal to 0.
Okay, if this individually equal to 0, but delta u and delta v are the arbitrary one. If these are the arbitrary, so you say that bracket will be equal to 0. If delta v is arbitrary, so you say that this bracket will be equal to 0. So that means we get curl f by curl u minus curl by curl x of f of ux minus curl by कर्ल y of f of uy. ओके, सिमिलरली जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी कर्ल f by कर्ल v माइनस कर्ल by कर्ल x of f v x माइनस कर्ल by कर्ल y of f v y इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज द आयलर ओस्टरग्रेडस की इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक था हमारे पास u और एक था v. तो हमारे पास जो पिछला आर्टिकल था उसमें केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंड ऑन x एंड y. ओके, लेकिन यहाँ पर u भी डिपेंड ऑन x एंड y है, तो उसके लिए ये आयलर ग्रेडस की इक्वेशन आ गई, और v भी डिपेंडेंट ऑन x एंड y है, तो उसके लिए ये आयलर ग्रेडस की इक्वेशन आ गई. ओके, सो इन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू यूज these Euler equations. Okay, now next we have one example. You have to find out the curve of shortest distance. Okay, and you have to find out the length of that shortest curve. जो भी हमारे पास कर्व आएगा इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, सो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक शॉर्टेस्ट कर्व यू हैव टू फाइंड आउट, और उनके बीच की जो लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट कर्व की जो लेंथ होगी, दैट यू हैव टू फाइंड. Okay, so what you have to do, since length of the arc joining the point is integral of the ds. Ds if you take the small integral. Okay, so I mean small part of the curve. So if we say that कि अगर हमारे पास, अगर हम 2D में बात करते थे, so 2D की बात करने के लिए in the last article we have talk about कि suppose that if you have this one and small part we are taking that ds. अगर मैं इसे मान लीजिए ds कॉल करता हूँ, तो हमारे पास corresponding parallel I take on parallel to y axis. This is suppose y and this is suppose x. So I take that parallel to y and I take parallel to x axis. So it is the small part of x. So I say this is dx and this is say dy. So when you apply the Pythagoras theorem, ds square will be equal to dx square plus dy square. Okay, similarly in the 3D if you talk about, so in the 3D ds square will be equal to dx square plus dy square plus dz square. Okay, so that will be actually ds square. So if we talk about, so you will say dx square I take common throughout. अगर dx square कॉमन लेते हैं तो it will be 1 plus dy by dx whole square plus dy by dz or dz by dx whole square. Okay, so it will be y dash, it will be z dash. So it will be dx square 1 plus y dash square plus z dash square. अगर स्क्वायर रूट बोथ सेट करते हैं तो that will be ds will be equal to root 1 plus y dash square z dash square y dash square plus z dash square into dx. Okay, so just you have to take that the integral of this will give you the length of the arc. So I just take the integral of this thing. So integral of this will be equal to integral of this thing. So I just use. Okay, so integral of this thing we will use here. So length of the arc will be integral of ds. So I take place the value of the ds as root 1 plus y dash square plus z dash square into dx. So that means in the integral you have to take the limit for x. So if you have to take the limit for x, it is given actually. So आपको जो दो पॉइंट्स गिवन थे, from there you can check that there is x, y and z for one point and x, y, z and for second point. So you say that ये आपका क्या हो गया x1, y1 and z1, ये हो गया x2, y2 and z2. So इसे आप कॉल कर सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट पॉइंट कि x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई 1 एंड y एट x इक्वल टू 1 वो आपके पास क्या मिल गया 2. y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है. ओके, एंड z की वैल्यू कितनी है 3. सो यू से दैट z एट x इक्वल टू 1 दैट इज 3. ओके, सिमिलरली फॉर द सेकेंड पॉइंट x आपका क्या है 5. सो फॉर x इज 5 यू कैन से x2 इज 5. सो y की वैल्यू 5 पर कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू x2 पर कितनी आ गई है, सो y एट 5 इज 7 एंड सिमिलरली z एट 5 दैट विल बी इक्वल टू 2. तो ये वैल्यू आपकी गिवन है. सो बाय यूजिंग दिस वी विल फाइंड आउट द बाउंड्री कंडीशन. सो वी यूज हियर. ओके, सो दैट इंटीग्रल यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल 1 to 5
रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर डी एक्स. सो एक्स की लिमिट हमने पुट की 1 to 5. बट हियर इंटीग्रैंड इज दिस वन. एफ क्या बन गया आपके पास, रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर. तब आपके पास यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स. एक ही एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो उसके लिए हमारी करस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन क्या बनेगी. आइलर इक्वेशन हमारी इसके एक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, मान लीजिए हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो उसके लिए क्या बनता है, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश. ओके. सिमिलरली इसी तरीके से जेड भी है हमारे पास, वो भी केवल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए भी कर्ल बाई कर्ल जेड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल जेड डैश. ओके, दिस विल बी द आइलर इक्वेशंस. सो ये आपके बाउंड्री कंडीशंस थी, उनको यूज करके हम जस्ट फॉर द टू डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम एक आइलर इक्वेशन हो गई ये फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, ये बन गया आइलर इक्वेशन. ओके. सो इन दैट इक्वेशन वी यूज दैट कि हमारे पास ना तो वहाँ पर वाई है ना ही जेड है. अगर वाई नहीं है तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई आपका जीरो हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, और कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश की वैल्यू हमने पुट की. ओके. सिमिलरली जेड भी, वो जेड के भी इंडिपेंडेंट है. ओके. अगर ये जेड के इंडिपेंडेंट है यू कैन चेक दैट कि हमारा यहाँ पर जेड प्रेजेंट नहीं है. अगर जेड प्रेजेंट नहीं है तो कर्ल एफ बाई कर्ल जेड आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी जीरो इफ़ दिस पार्ट इज जीरो. सो सिमिलरली ये आपके पास क्या बन गया, पहले इस पार्ट के लिए देख लीजिए जो पहली इक्वेशन से आया, जीरो माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो. ओके. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाई डैश अपॉन रूट इज इक्वल टू ए. ओके. इसे इक्वेशन 5 कॉल कर देते हैं. ऐसे हम फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कर्ल एफ बाई कर्ल जेड जीरो हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल जेड डैश, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास 4 को सोल्व करने के बाद ये आ जाती है इक्वेशन, जीरो माइनस दिस विल बी जीरो. इंटीग्रेशन अगर सोल्व करते हैं तो जेड डैश अपॉन रूट की वैल्यू क्या आ गई, पी. अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है ए, इसकी वैल्यू आ रही है बी. अगर मैं इन दोनों को ही आपस में डिवाइड कर देता हूँ तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन द वाई डैश एंड जेड डैश. ओके. सो यू विल सेट दैट वाई डैश अपॉन division denominator will be cancel out, y dash upon z dash will be equal to a by b. Okay. So it will be y dash upon z dash, I call that will be a by b. A by b is some constant, I call it as c. Okay. So you say that कि y dash will be equal to c into some z dash. Okay. तो y dash की वैल्यू मैं c into z dash यूज कर सकता हूँ. So use this value in that equation number 5. तो हम यहाँ पर वाई डैश की जगह क्या यूज कर देते हैं, सी इंटू जेड डैश. तो ऊपर बन जाएगा सी इंटू जेड डैश डिवाइड बाई रूट 1 प्लस सी स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए. सो यूज हियर. ओके. एक्चुअली हमें वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वो आपका टारगेट है. सो वट इट विल बी सी इंटू जेड डैश अपॉन दिस थिंग विल बी इक्वल टू ए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस वन एंड आफ्टर स्केलिंग वी विल गेट दिस थिंग एंड sorry, when you collect these terms means you have to find out the value of the z dash. So after collecting z dash will be equal to a by root of this thing. But ये आपकी constant value है, I call this constant is equal to d. Okay. So that means z dash is equal to d. When you take the integration that will be z is equal to dx plus some e, where d and e are the constants. But हमारे पास boundary condition given है for the z. So z 1 पर आपकी क्या वैल्यू दे रहे हैं 3 एंड z 5 पर वैल्यू दे रहे हैं 2. So use here when you put z x is equal to 1, z equal to 3, so you will get d plus e equal to 3. And when you put x equal to 5 and z equal to 2, so you will get 2 is equal to 5d plus e. So इन दोनों को सॉल्व करके d और e की वैल्यू निकालते हैं. d आपका -1/4 और e आ गया आपका 13/4. सो ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद दोबारा यहाँ पे प्लेस कर दो 8 में. सो वी विल गेट 8 विल बी z is equal to minus x/4 plus 13/4. ओके. सिमिलरली यू नो दैट z की वैल्यू आपके पास आ गई है, लेकिन y और z में हमारे पास रिलेशन थी. हियर वी टॉक अबाउट कि y आपका क्या था, y डैश वॉज c इंटू जेड डैश. ओके. सो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, वहाँ से डेरिवेटिव निकाल लीजिए z का. सो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है -x/4 प्लस 13/4. सो फ्रॉम हियर z डैश आपके पास क्या आ जाएगा -1/4. सो यहाँ पे पुट कर देते हैं c इंटू -1/4. सो -c/4 कोई कांस्टेंट बन गया, इसको कॉल कर देते हैं सम f. तो यानी कि y डैश इज इक्वल टू f. जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे दैट विल बी fx प्लस सम g. ओके. वेयर g इज सम कांस्टेंट. सो दैट मीन्स यू गॉट दैट कर्व. नाउ अगेन यूज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द y. अगर मैं y की बाउंड्री कंडीशन यूज करता हूँ, सो फॉर दैट y1 2 है, y5 आपका 7 है.
सो दोनों वैल्यू यूज करने के बाद ये दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सोल्व करने के बाद एफ आई आपका 5/4 एंड जी इज 3/4. ओके, जी इज 3/4. सो बाय यूजिंग बोथ द वैल्यू यू प्लेस इट देयर, वाई आपका आ गया 5/4 प्लस 5/4x प्लस 3/4. ओके, बट आपने शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. शॉर्टेज डिस्टेंस हमारे पास क्या था इंटीग्रेंट, दैट वॉज 1 to 5 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर. सो आपके पास वाई डैश की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, आपके पास वाई आ चुका है और जेड आ चुका है, तो वहाँ से वाई डैश निकालिए, आपका आ जाएगा 5/4. और जो ऊपर इक्वेशन आई है, आपके वहाँ से जेड डैश की वैल्यू आ जाएगी. जेड डैश आपका क्या आया -1/4. फ्रॉम हियर यू कैन चेक दैट इट इज जेड डैश इज -1/4. तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. हमारे पास रूट क्या बन जाएगा 1 प्लस 5/4 स्क्वायर, दैट विल बी 25/16, and -1/4 square, that will be plus 1/16. So when you solve this root, that will be root 42/4 and integral of 1 to 5 1 dx. So जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे you will get x and with the limit 1 to 5. So 5 minus 1, that will be 4. 4 cancel, root 42. So that means the distance between the 2 points which was given, the distance between them will be this thing, root 42. Okay, so in this way, by using the same Euler equation, you can solve the given problems. Okay, so next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.